Welcome to Nifty and Banknifty analysis with top stocks and important levels in under 7 minutes. Starting things off with Nifty, what can we see here? This is the daily chart और हम लोग देख सकते हैं कि आज का दिन काफी एक शार्प रेड कैंडल दिखा रहा है. इसमें ब्लैक है बट टेक्निकली रेड है क्योंकि वो बेरिश कैंडल है और वो बेरिश कैंडल ने यहाँ का गैप फिल कर दिया है which is a good sign in my view. Coming to RSI has breached 60 and it is now at 53 which is obviously क्वाइट अ शार्प फॉल बट RSI 50 के ऊपर होता है दैट शोज बुलिश बायस. नाउ एक और चीज मुझे इसमें दिखी, इफ आई जस्ट चेंज टू द लाइन चार्ट व्हाट कैन वी सी हियर, वी कैन सी कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट है. इवन दो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नीचे गिरा है, मार्केट डाउन है, इट इज नॉट अ बेरिश मार्केट येट. एटलीस्ट 15600 को तोड़ेगा फिर हम लोग शायद थोड़ा बोल सकते हैं कि शॉर्टर टर्म बेरिशनेस दिखाई है मार्केट ने. But until then, we are still very much in a bull market. Sideways corrections and even normal corrections always keep on happening. Now, coming to the 60-minute chart, जिस तो हम लोग को थोड़े levels का idea आ जाता है. What can we see here? We can see कि 835 के ऊपर 15835 के ऊपर सिर्फ 4 बार निफ्टी क्लोज हुआ है. एक यहाँ था, दूसरा आई थिंक यहाँ कहीं था, देन वंस हियर एंड वंस येस्टरडे. बट कभी भी 2 दिन क्लोज नहीं हुआ 835 के ऊपर. बेसिकली इट हैज नेवर क्लोज्ड अबव 835 ट्वाइस इन अ रो. सो व्हाट कैन वी सी हियर, पिछले बार भी 835 के ऊपर क्लोज करके एकदम शार्प सेलिंग आ गया था एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग हियर एज वेल, व्हिच मींस दैट 835 के ऊपर 2-3 दिन शायद क्लोज करेगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ 15900 मूव only then in my view. Now coming to the levels, what can we see here? 835 breach kiya, bullish channel breach kiya. Now it is at this trend line here, which is just a 3-day trend line, so it's not that important. And it has also breached 733 on a closing basis. Aaj call writers काफी नाच रहे होंगे actually, and put buyers also because momentum से गिरा है. And I had a tweet, I tweet something कि निफ्टी 1 मिनट के चार्ट पे, ऑन अ 1 मिनट चार्ट, निफ्टी हैड नॉट इवन मैनेज टू stay consistent above RSI 60 on the 1 minute chart, which shows कितना selling आ गया था. In terms of the losing sectors, except IT, all the sectors were down. Metal stocks काफी नीचे थे. IC Bank, HDFC Bank and Reliance were one of the top draggers for Nifty today. So that is what we saw. In terms of the levels for tomorrow, वो सब description में भी होंगे and they were there on this display as well. Now here, what can we see with Bank Nifty? Bank Nifty का daily chart है ये, और Bank Nifty actually गिरा है, हाँ, it has come down a lot. But in the grand scheme of things, it is still making a higher high. Nifty ने कैसा किया था कि consolidate हो रहा था एक tight range के अंदर, especially जब हम लोग line chart देख रहे थे. Bank Nifty actually वो तोड़ा था and now it is slightly retesting. So I think Bank Nifty overall is a little better than Nifty. It is actually still in that bullish channel, which is great. Nifty का bullish channel थोड़ा steeper था, but उसने bullish channel तोड़ भी लिया है. So that's what we're seeing. Coming to the 60-minute chart, just to get an idea, what we can see here is कि वो bullish channel पे ही support ले रहा है. 35,330, 35,350 के ऊपर अगर जाता है कल, then I think we can expect some bullishness happening. If not, देन नेचुरली नीचे जा सकता है एंड बैंक निफ्टी में गैप फिलिंग होगा ये लेवल के आसपास. सो around this level, which is 35,000 retest. So that is what we are seeing. Bank Nifty RSI on 60 minute is 40. Nifty RSI on 60 minute was below 40. So those are some very interesting things that we are seeing. Now coming to the top stocks of the market, starting things off with Reliance. Reliance में हम लोग क्या देख सकते हैं, मैं मूविंग एवरेजेस भी ला देता हूँ. What we can see here is कि 50 MA सपोर्ट लिया था. Just yesterday I had said that Reliance is actually just 1% away from 50 MA and आज उसने वो 1% almost down हो गया. So we can see 50 MA support. I think at this level Reliance is very interesting. अगर ये बाउंस नहीं कर पाता, इनफैक्ट अगर 2080 होल्ड नहीं करता, then possibly 2050 तक का I can sort of picture a move until that point. Now, next stock is HDFC Bank. HDFC Bank, now what can we see? We can see that it's come back down. It is below that famed 1529 level, and I think above 1529 it can still show us something, but real momentum might just come above yesterday's high, क्योंकि yesterday का high actually एक spinning top है, हम लोग देख सकते हैं. Volumes उतने high नहीं थे, but still it's a spinning top, so maybe above the spinning top we could see some bullishness happening. Now coming to the next stock, which is Infosys में हम लोग देख सकते हैं कि जो 13 MA है और 13 MA है and
this line that we had drawn at 1560, that is acting as a support. So मेरे हिसाब से this line is going to be very important. एक close ये line के नीचे आ गया, then I think we might expect some sort of sideways or some sort of bearishness in Infosys again for the very short term. Overall जो trend है Infosys का वो naturally काफी bullish है, and this actually makes me think of a very interesting thing. वो वीडियो बाद में आएगा आज ही, but it is related to Tata Motors and the future of Tata Motors, because many people think कि एक बार अभी नीचे आ गया है, एलसी लग गई है टाटा मोटर्स को, being such a good blue chip stock, then what would be the future? I have a video on that which is coming very soon right after this, so make sure you are staying tuned for that. Now coming to HDFC, it's held above 2500, which is a good sign. RSI 50 support, so let's see if it's able to hold this level. 2500 के ऊपर मेरे हिसाब से it could potentially make good moves. Next stock is ICICI Bank, which is the top dragger for today, one of the top draggers. इसने भी gap fill किया है just like Nifty, which is very interesting. अगर हम लोग RSI देखे जो लोड नहीं हो रहा आज मेरे ये केस में, which is kind of crappy, but ठीक है, it is what it is. Basically 630 level के ऊपर मेरे हिसाब से ICICI Bank still makes a lot of sense. Below that possibly not. Next stock that we are looking at is Kotak Bank. Kotak Bank में एकदम sharp price rejection मिला है हम लोग को, and it is kind of from this trend line को retest करके resistance मिला है. बट देन आज ओपन भी वो फिब लेवल के नीचे हुआ था, एंड 1760 के आसपास एक रेजिस्टेंस है ही. सो आई थिंक इट ऑल सॉर्ट ऑफ केम टुगेदर वेरी वेल. नेक्स्ट स्टॉक विच इज देयर इज एक्चुअली एसबीआई एंड नॉट एक्सिस बैंक. एक्सिस उसके बाद आएगा. एसबीआई में भी हम लोग को काफी एक बड़ा सा रेड कैंडल दिखाई दे रहा है ऑफ अराउंड 2%, विच इज प्रिटी साइजेबल. वन मोर गैप फिलिंग. सो एक काफी कॉमन चीज हम लोग को नजर आ रही है अमंग ऑल ऑफ दीज मेजर स्टॉक्स इंक्लूडिंग निफ्टी. Okay, even Nifty में ऐसा है. Now coming to Axis Bank. Axis Bank has actually not filled in that gap. Axis Bank ने gap पूरा fill नहीं किया closing basis पे, वरना ऐसे तो fill किया है. So that is basically what we are seeing. Anyway, for more insight into what I was talking about Tata Motors, make sure you check the next video, and happy trading.